Hello everyone and welcome to this world of gadgets. Welcome to your favorite show about gadgets, Gadgets 360 with Technical Guruji. And I know there's a very special reason why, all of you love this show because मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ about all the new products जो शायद नए आए हैं या शायद आने वाले हैं, because at times I show you this exclusive sneak peek in the world of gadgets. And this week was fun because इतना सारा नया टेक हमारे चारों तरफ है, multiple new launches, crazy new things. Let's start and explore क्या हुआ in the world of gadgets. My name is Gaurav aka TG. Let's start this episode of Gadgets 360 with Technical Guruji. तो चलिए शुरू करते हैं. So guys, sit tight and fasten your seatbelts because in this section of news of the week आपको मालूम चलने वाला है कि what all was launched and multiple new updates in the field of gadgets this week. This week was a week of phone launches for the Indian tech industry. शुरू करते हैं Moto Razr 40 सीरीज के साथ. Moto Razr ओरिजिनल ने फ्लिप फोन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया था. iQOO Neo 7 Pro ने भी इंडियन मार्केट में एंट्री करी है दिस पास्ट वीक, टैगिंग इटसेल्फ एज द MVP फॉर गेमिंग. OnePlus ने तो एक कंप्लीट array ऑफ गैजेट्स लॉन्च किया है, नेमली द Nord 3, Nord CE3, Buds 2R एंड द Bullet Wireless Z2 विद एक्टिव नॉइस कैंसलेशन. The Nord 3 and Buds 2R ये currently up हैं सेल के लिए, while the other two products will be available in a month's time. Joining the launching streak in India, Realme का Narzo 60 series and the Samsung Galaxy M34. Phones की न्यूज से आगे चलें तो there were other electronic launches like Kia introduced its Seltos, calling it their badass car. It will be open for booking starting from 14th of July. Garmin ने लॉन्च किया है अपना Phoenix 7 Pro Series and Epix Pro Series in India. एंड लॉन्चेस असाइड, मेटा ने अनवेल किया अपना ट्विटर कॉम्पिटिटर थ्रेड्स. ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है फॉर पीपल टू फ्रीली शेयर देयर थॉट्स. यूजर्स कैन इजीली फाइंड एंड फॉलो अकाउंट्स नोन टू देम. Guys, now I'm sure you all know why I was telling you कि ये वीक में हमको बहुत सारे गैजेट्स मिले हैं. Basically every day there was something new being launched and my favorite of the bunch is this right here in front of me, the all new, much awaited, brand new Razr 40 lineup. So I've got two phones. This is the affordable version, the flip phone for the masses, which is the Razr 40, and then we have this, the flagship, the most powerful Moto Razr 40 Ultra. And I mean, this is my personal favorite because of this, the immersive cover screen. ये 3.6 inches का display है, and I mean, this phone is right now the phone which comes with the world's largest cover screen for any flip phone. और the fun is कि आप यहाँ पे screen पे सब वो काम कर सकते हो जो आप normally एक टिपिकल फैशन में अपने स्मार्टफोन में करते हो. तो बेसिकली दिस ब्रिंग्स इन दैट कूल फैक्टर. आप यहाँ पे मैप्स यूज कर सकते हो. यू कैन टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप लेट्स से, एंड इफ यू हैपन टू यूज दिस लाइक अ नॉर्मल फोन, जब आप इसको ओपन करते हो तो वी हैव दिस 6.9 इंचेस 165 हर्ट्ज फ्लेक्सिबल एमोलेड स्क्रीन. एंड व्हाई फ्लेक्सिबल? बिकॉज आप ऐसे कर सकते हो. तो आई मीन दिस इज वेयर ऑल द फन इज, एंड द वे द मोटोरोला हैज काइंड ऑफ implemented this new hinge design. ये फोन दुनिया का वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट flip phone बन जाता है, and it's actually very sleek. Same time, the hinge is designed in a way that यहाँ पे आपको कोई gap नहीं मिलता है. This has this gapless design, और cover screen के ना बहुत सारे फायदे हैं. If you just using your phone for some quick bits, तो वो सारा काम आप यहीं पे कर सकते हो. At times you don't need to even open the phone. Plus, I'm loving this new Viva Magenta color. This happens to be the Pantone color of the year. काफी interesting soft leather finish है. Looks quite catchy, quite premium. But if in case you want something subtle, so we have this black option as well. It has dual cameras, and for a fact, because we have this cover screen, you can actually use these cameras to click pictures, like to click selfies. Because if you just twist this, you can activate the main cameras and actually click selfies. मजे की बात, because it's a flip phone, so you can keep it like this, and it holds quite well in between of 45 to 130 degrees. So let's say like in this position, and then you can consume all your content. You
can use this as a tripod, you can kind of use it like in this tent mode. So multiple different ways of using a flip phone powered by Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. This has a 3800 mAh battery, many more features. So let's see up close what all this Moto Razr 40 Ultra is about. The flip phone segment is one of the most exciting segments in the market today. And हर कंपनी कोशिश कर रही है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर फ़ोन बनाए जिसमें ज़्यादा इनोवेशन हो, ज़्यादा फीचर्स हो और ज़्यादा एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी हो, वो भी इस ऑलरेडी एक्साइटिंग रेट्रो फॉर्म फैक्टर में. And Motorola has come out all guns blazing when it comes to the Razr 40 Ultra. The Razr 40 Ultra ये फ़ोन powered है Qualcomm के Snapdragon 8 Plus Gen 1 से, which is a flagship grade processor. This is coupled with 8GB of LPDDR5X RAM and 256GB of UFS 3.1 storage. So obviously ये फ़ोन fast है, snappy है and it can handle all the tasks you throw at it with relative ease. सुनने में हालांकि 3800 mAh की बैटरी insufficient sound कर सकती है, but it lasts surprisingly long thanks to the power efficient processor. ये फोन बॉक्स में ही फास्ट चार्जर के साथ शिप होता है. हालांकि in a couple of tests it showed that it charges slower than other phones in the same segment. The Razr 40 Ultra sports a 12 megapixel sensor with OIS. ये इसका प्राइमरी कैमरा है और इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो मैक्रो का भी काम करता है. सेल्फी कैमरा इज अ वेरी केपेबल 32 मेगापिक्सल सेंसर. सो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन की क्वाइट डिसेंटली स्ट्रॉन्ग है. इट डज नॉट पोज इटसेल्फ टू बी ए कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन, बट ये मैनेज कर लेता है काफी ग्रेट रिजल्ट्स क्लिक करने के, वो भी डिसेंट डायनामिक रेंज एंड वेरी रियलिस्टिक कलर रिप्रोडक्शन के साथ. Moto has capitalized on the form factor, giving users the option to use the phone in any angle. This flexible piece of technology, it can do it all. Priced at 89,999, the Moto Razr puts itself high up on the ladder in the flip phone segment, and it is bound to pique the interest of those who have been itching to get a flip phone. Well guys, if this sounds expensive to you and आपको still मजा चाहिए एक flip phone का, तो Motorola has got you covered because we have this, the all new base variant of the Razr 40 series. This is the Razr 40. I mean similar form factor, of course it's a folding flipping phone with this kind of same 6.9 inch flexible AMOLED screen powered by the Snapdragon 7 Gen 1 chip. Again this has 8GB RAM and 256GB storage. Battery is in fact improved on this one. This now has a 4200 mAh battery, but then there are a few changes because यहाँ पे अगर आप देखोगे तो although the hinge and everything feels similar, the cover screen is much smaller now. यहाँ पे आपको एक छोटा सा screen मिलता है just to get a brief idea of the notifications and just do some basic tasks. यहाँ पे तो आप you can have smartphone vibe going on, but this one is kind of just for the basic usage. But then again, because this is a flip phone, तो वो सारा जो पूरा cool factor है of like doing all these things with a hinge, you can all do that. And as a time pass, because this also is a machine, so close, open, close, open, close, open, all that things are possible. And because I'm talking about a Motorola smartphone, we just happen to go in a party and dance. You do this and the flashlight turns on. Do this, it turns back off. तो मतलब बहुत सारे cool options हैं, and this one starts at 59,999 rupees. Guys, another big launch this week was straight from OnePlus on 5th of July, wherein we saw multiple new Nord products. The OnePlus Nord 3, the OnePlus Nord C3, the OnePlus Nord Buds 2R and OnePlus Bullet Wireless Z2 with ANC. I mean, multiple new products, and two of these will go on sale next month. But what we have in front of us is this, the all new OnePlus Nord 3 and the Nord Buds 2R. And speaking of this, इस फोन में बहुत ज़्यादा fun है. This becomes the first Nord so far with 16GB RAM. सोचो कि आप इतनी पावर से क्या क्या कर सकते हो अपने फोन में. यहाँ पे we have Dimensity 9000 processor. The camera is also improved because अभी यहाँ पे Sony IMX 890 sensor आ चुका है. It is with 50 megapixels and OIS. सामने we have this nice AMOLED screen running on 120 Hz. Bezels काफी कम है. Screen looks really good. We have the iconic OnePlus's alert slider. So मतलब अगर फोन आपने लॉक भी किया है तो you can clearly
easily switch profiles if you want the phone to be on ringing, vibrate on silent mode. 5000 mAh की इसके अंदर बड़ी बैटरी है, supporting super VOOC charging, so long sessions, no problems. And I mean, this really feels a polished phone. It has dual speakers with the Dolby audio and everything. So मेरे ख्याल से phone looks promising. Let's see up close कि OnePlus Nord 3 में OnePlus ने क्या-क्या पैक किया है. No stone has been left unturned when it comes to performance either. Nord 3 top of the line MediaTek Dimensity 9000 chipset के साथ आता है, 16GB RAM. Now that is some insane computing power, especially compared to the Nord 2T. So you can expect a fluid experience. अब चाहे आप वो day to day अपने tasks कर रहे हैं या casually heavy games भी play कर रहे हैं. The camera on this phone, ये वही IMX890 सेंसर है जो आपने OnePlus 11 में भी देखा था. It is also capable of shooting 4K 60 FPS along with AI noise reduction. The camera system is completed by the 8 megapixel ultra wide camera जो काफ़ी अच्छे results दे रहा है. इस फोन में एक 5000 mAh की बैटरी है along with 80 watts का super VOOC charging adapter जो आपको बॉक्स में ही मिल जाता है. And as with most OnePlus phones, battery life is not an issue. Prices शुरू होते हैं 33,999 से for the 8GB variant, and we anticipate that this phone is going to shake up the segment for sure. Guys, speaking of Nord, this is another entry from OnePlus straight in my hands. The all-new OnePlus Nord Buds 2R. एक affordable option है for all you TWS fans. This is priced at 2,199 rupees. I mean, interesting design, quite unique, in its own design. And इसको आप pair कर सकते हो with the all-new Nord phone or with any phone, for that matter, जहाँ पे Bluetooth आपको support मिलने वाला है. Decent features for the price, I would say, and just another option for you to choose because right now the TWS market is growing like crazy. हमारे पास में बहुत सारे options हैं. This just happens to be the latest entry from OnePlus, the Nord Buds 2R. And I mean, in this show, it's all about new products, new things, and many such new things for you. But right after the break, I'm going to see you and discuss about your questions as well in Ask TG. Hello guys, welcome back after the break. My name is Gaurav, aka Technical Guruji, and this is Gadgets 360 with Technical Guruji, your favorite show of gadgets. And यहाँ पे आपका show favorite इसलिए है because we talk about all your favorite gadgets, some cool products, and I always give you this cool information as well. साथ में मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, product items अच्छे होते हैं, but you need that juicy information जो शायद आप अपने friends के साथ जाके flex कर सकते हैं. And I must tell you, see, today we all have various input devices for all our products. Sometimes हम gestures use करते हैं, sometimes we use the touch. With PCs we have the keyboard, mouse, trackpad, multiple things. But did you know the first mouse was called XY position indicator for displays? उसका नाम माउस था ही नहीं. इट वॉज मेड अप ऑफ वुड, डेवलप्ड बाय द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट. वहाँ पे दो प्रोफेसर्स थे, डगलस एंजलबार्ट एंड बिल इंग्लिश. उन्होंने इसको बनाया इन द 1960s. इनिशियल नेम वॉज क्वाइट बोरिंग, XY पोजिशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्लेज, एंड द रीजन वॉज बिकॉज इफ यू टेक द डिस्प्ले एज अ ग्रिड, द माउस or like not mouse, that device would actually indicate the position in an XY grid and let the system know कि आप कहाँ point करना चाहते हैं. Eventually the term mouse was coined because the inventors looked at it and because the cable was running out, उनको लगा दिखने में कि शायद ये एक mouse की तरह है. So that's how the thing started, and they did a demo in the 1968 and called the mother of all demos. और वो एक दिन है एंड एक आज का दिन है. गोइंग इन फ्यूचर वी माइट नॉट इवन हैव एनी डिवाइस. हम शायद कुछ पहन के बैठे होंगे और अपने हाथों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे. But then again, we all have played in schools, of course, with that heavy mouse ball. करते करते today तो we have multiple new mouses. But did you know this fact? Let me know by writing all your comments to tg@ndtv.com. Guys, now comes the best part of this show because this is the time wherein I get to interact with all of you, answering all your questions. And this week we have some interesting questions. Let's see what's there in Ask TG. Hi Technical Guruji, I am a big fan of your show. I love watching your show. So my question is, how do I keep my laptop battery in a good health? Pretty simple actually. बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, what you do is आप लैपटॉप को अपने गोद में रख के यूज करते हो, you keep it on your bed and then use it,
होता उससे ये है कि बिकॉज द लैपटॉप इज नॉट एबल टू गेट प्रॉपर वेंटिलेशन, वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में यू नो द बैटरी इज देयर टू सफर बिकॉज टेम्परेचर एंड द बैटरी इज दे डोंट गो वेल अलोंग. तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन कीप योर लैपटॉप यू नो ऑन अ डेस्क और मे बी ऑन अ लैपटॉप टेबल और समथिंग जहाँ पे आप यूज करने वाले, सो दैट इट गेट्स प्रॉपर वेंटिलेशन, वो ज्यादा गर्म ना हो और उसकी बैटरी ठीक तरीके से परफॉर्म करे. एट द सेम टाइम समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी जस्ट कीप आवर लैपटॉप्स प्लग्ड इन ऑल द टाइम. हमको लगता है कि बस यू नो हमेशा द बैटरी शुड बी एट फुल एंड वी यूज लैपटॉप एज डेस्कटॉप्स. होता उससे ये है कि दैट द बैटरी इज नॉट यू नो गेटिंग अ गुड चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स. बैटरी अपना काम कर नहीं पा रही है एंड इवेंचुअली यू एंड अप लूजिंग दैट बैटरी लाइफ. तो लैपटॉप को लैपटॉप की तरह यूज करो, गिव इट गुड वेंटिलेशन एंड इफ यू डू ऑल दिस, आई होप दैट यू विल गेट अ लॉन्ग लाइफ विद योर लैपटॉप्स बैटरी. There's so much happening around us. मतलब समझ नहीं आता है टाइम्स कि किसके लिए एक्साइटेड होना है और किसको ऐसे इग्नोर करना है, बिकॉज टेक इज ऑल अराउंड. एंड स्पीकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्स फॉर एग्जाम्पल, आई मीन हम सब ने डेमोज देखे हैं यू नो फ्रॉम द पास्ट मल्टीपल टाइम्स, चाहे वो फ्लाइंग टैक्सीज हों या फ्लाइंग क्वाडकॉप्टर्स हों. आई एम नॉट श्योर कि वो वाइड स्प्रेड कितना जल्दी होने वाला है. एंड देन कम्स द सेफ्टी एस्पेक्ट एज वेल, और क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको ओन कर पाएंगे या नहीं, दिस रिमेन्स टू बी अ क्वेश्चन. सो वो एक पॉइंट है. रोबोट्स yes, but you know should be useful for us, you know, more than being harmful. तो अगर वो होगा तो why not? But I think if you know I am being all realistic, I am excited about you know mobile phones going away. Imagine a technology जहाँ पे and eventually we'll have it, jahan pe you know we have a chip somewhere you know here and we are able to control everything, we are able to get all the information, everything without using any single device. So I think that is something that excites me. Let's see वो कब होता है. सवाल ये है कि अगर मैं PS5 और Xbox Series X में कोई एक चूज करना हो तो कौन सा करूँ? Okay, I'll give you my answer. I use both, and the reason is I love Forza, which is exclusive for Xbox, and I love Spider-Man as well, which is exclusive to the PS5. So the answer is you need to choose the games you want to play. You know, you want to see कि आपके friends क्या use कर रहे हैं, वो कौन से console पे हैं, and then decide. I mean, speaking of you know performance, I would say they are completely on par with each other. आपको दोनों में काफी ज़्यादा मजा आने वाला है, but you need to pick कि आपको कौन से game ज़्यादा पसंद है, and maybe if that game is exclusive to a particular console, PS5 और Xbox, you would choose that way. और आपके friends कौन सा ज़्यादा use करते हैं, because this is all about networking. तो अगर आप अकेले खेल रहे हो, there is no fun. Choose wisely. I mean, not completely and not so soon, but the smart glasses, the VR, AR, all these things, they definitely have the potential to someday maybe you know replace the smartphone, maybe a laptop or even an iPad. You know, like all these computing devices, शायद ये सब replace कर सकता है एक ढंग से अच्छे से काम करने वाला स्मार्ट ग्लास सिस्टम, बिकॉज इट इज सो कन्वीनियंट एंड इट गिव्स यू ऑल दैट फ्लेक्सिबिलिटी. सो हु नोज, मे बी नेक्स्ट 5-10 years we might see everyone wearing these glasses with no smartphones in pocket. Could be a reality. So guys, I'm sure you all loved this week's episode because this week was complete crazy fun. बहुत मजा आया. इनफैक्ट मुझे इन गैजेट्स के बारे में बात करने में इनफैक्ट आप सभी के सवालों के जवाब हमने दिए हैं. बहुत सारी बातें अभी और करना बाकी हैं. If you have any question, any feedback, anything to write, you know the email address. It's tg@ndtv.com. Don't forget to send in whatever you have. मैं और मेरी टीम पूरा इंतजार करने वाली है आप सभी के सारे emails का. And I'm gonna see you next week exactly at the same time on this show. कुछ और exciting products, some exclusives as well. काफी मजा आने वाला है. See you next week. Thank you and have a good day.